Although you have been through a grueling surgery, I was like, oh my God, how did you do this? How did you tough. How did you pull this off? And this was an accident that happened 8 years ago. 8 years ago. Now, just take me through that accident again, because not many people know how life-threatening it was. Yeah. You were going from Karachi to Hyderabad for a shoot, right? जो हाईवे है, सुपर हाईवे, कराची टू हैदराबाद वाली, अच्छा वो शायद अब बेहतर बन गई हो रोड. और ये 2016 की बात है. 15 की बात है. 2015 की बात है. मेरी पहली फिल्म कराची से लाहौर रिलीज हुई थी अगस्त में, एंड आई वाज फ्लाइंग हाई, आई वाज एट द पीक, यू नो, बुलबुले वाज एट इट्स पीक. माय फिल्म अब टूटी फ्रूटी गाना आया था, एंड आई वाज लाइक, तो ऑफ कोर्स आई फील के नजर तो लगी. आई बिलीव इन दैट. मतलब आई बिलीव कि आपको एक्सटर्नल एनर्जीज इफेक्ट करती हैं. नजर तो बहुत है, बिल्कुल. एब्सोल्युटली. सो दिस हैपेंड इन दिसंबर. असफर रहमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे कॉलीग हैं, उनके साथ मैं जा रही थी, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी आई ऑलवेज कम इन माई कार with my driver. जब से मैंने कराची आके अपनी गाड़ी खरीदी, आहिस्ता आहिस्ता पहली गाड़ी खरीदी, फिर ड्राइवर रखा. I still don't drive, by the way. I don't know how to drive. You don't know how to drive? ये बड़ी empowered woman. That's okay. Independent. That's okay. But I don't drive. So I told my driver कि अच्छा, me and Asfar, we haven't caught up in a while. 3 घंटे की ड्राइव है. तो मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को असफर के घर पार्क करवाया. असफर की गाड़ी में शिफ्ट हुई उनके ड्राइवर के साथ, और मैंने कहा चलो हम चलते हैं टू हैदराबाद. एंड इट वाज द लॉन्च ऑफ स्टोर, कपड़े नाम था. हाँ, और अनुषे भी जा रही थी, एंड आई वाज इन असफर्स कार, एंड असफर हैड अ ड्राइवर हु वाज ड्राइविंग फास्ट, एंड मैंने उनको रोका भी था. बट मेरी गट इंस्टिंक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव आवाज़ है मेरी अंदर की, जिसको मैं पूरी जिंदगी दबाती रही. And I guess you grow up not having faith in your own decisions, and it all comes from childhood traumas. Not feeling like you're worthy, not feeling good enough, not thinking कि आपकी आवाज़ matter करती है, आप important नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, you don't know anything. So I never had faith in my own decisions and my own voice. So I was like, oh, ये मेरा वहम है, मेरा fear है. But when we got onto the highway, I had a vision कि accident होगा. Really? And I need to tell this guy to drive slowly. He was driving very fast. And did you? I did, multiple times. And he never listened. And he was laughing and he was saying, बाजी मेरा तो रोज का आना जाना है, तो मैं तो मुझे पता है, आप फिक्र ना करें. अच्छा, मैंने कहा ठीक है. लेकिन मेरी जो गलती मेरी थी वो ये थी कि मैंने पीछे, I was sitting at the back and I was not wearing a seat belt. Right. Seat belts are there for a reason. और अगर मैंने सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद मेरी एक भी इंजरी ना होती. It only happened, all my injuries happened because I wasn't wearing a seat belt. Right. So बहुत स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ. एक broken patch था रोड में. There was a truck in front of us. वो आ गया सामने, यहाँ से आ रहा था, हम बहुत तेज थे, सो इसने स्वर्व करने की कोशिश की, यहाँ से एक ट्रक लगा. So we were sandwiched between 2 trucks. And there were no, it's not like the Punjab motorway. I have to say it that whatever it is, roads in Punjab are so much better. You know, ये accident, मतलब motorway पे भी बहुत accidents होते हैं, वो और reasons होते हैं, but the road was very bad. It was broken. And ना उस साल उसी जगह पे 11 accidents हो चुके थे. December है ना, 12 months के अंदर 11 accidents had happened in that spot. And nobody had done anything about it. No. Amazing. And do you remember that there was an actor, female actor, उनका एक accident हुआ था highway पे, and she died, husband and wife थे. You know, नए younger actors. Sana, I think her name was. So I was told by someone later that आपका भी accident उसी spot पे हुआ था, and she died on the spot. And you know, there must be some, you're protected and you're blessed कि you survived it. So well, that accident happened, and when the accident happened, I thought I was going to die. And वो जो एक flash होता है,
सब कुछ उन चंद सेकंड्स में रिकलेक्शन होती है उस आई वक्त वाज की, लाइक or did अभी you तो black मेरी out? शादी भी नहीं हुई, अभी तो Okay. मेरे बच्चे भी नहीं First हुए, thought कि मैं अभी तो ये भी नहीं हुआ, what will happen to my mother? हाँ. In those 5 seconds yeah. all those thoughts came. Yeah. Then the accident happened and I'm holding my breath so tightly, और वो उस लेवल की टाइटनेस जो मैंने अपने अंदर की वो आज तक मेरी बॉडी में वो टाइटनेस है. You must have heard of the sentence, the body keeps score. Yeah. The body remembers all your emotions and Right. feelings. Yeah. And you have to release them. That's such an important message that the body remembers. Keeps it remembers. Yeah. So that tightness I still feel. Abhi bhi, when I'm in a car and somebody's driving fast or कोई truck से गिर्द होते हैं, I feel the same panic. Right. I am actively working on that PTSD as well. Right. So अब वो accident हुआ and I realized that I'm not dead. But I was in so much pain because मेरी collarbone टूटी, मेरी shoulder blade was fractured from 3-4 places. So I actually thought कि मेरी कोई ribs टूट गई हैं and they're poking into my lungs because I couldn't breathe. You couldn't breathe. So I thought मुझे heart attack भी हो रहा है, मेरे lungs भी puncture हो गए हैं. But what I was actually having was a panic attack along with all Right. the physical injuries. Yeah. So the panic attack became worse when I realized that we are in the middle of nowhere. Eventually, कोई पुलिस की एक गाड़ी रुकी and they kind of helped me out. फिर मुझे पुलिस की डाले में आगे डाला. There was a police वाला. I have a vision कि वो एक drive कर रहे हैं. Some police guy. Asfar was at the back with more police people, and I was just howling, and I was falling because I couldn't breathe. और मैं उनको बस यही कह रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही. अब मुझे I felt like heart attack है. और वो जो पुलिस वाले थे बस वो मुझे कह रहे थे कि आप बस कलमा पढ़ें. अब वो कह रहे हैं कलमा पढ़ें और मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ, तो वो कह रहे हैं कलमा पढ़ ले. I'm like मैं भी वही सोच रही हूँ, ठीक है कलमा पढ़ें. Oh my God, अच्छा बस कलमा ही पढ़ना है. कलमा ही पढ़ा, बहुत देर के लिए कलमा ही पढ़ते रहे. And that it gave me so much strength. फिर eventually I got to कोई dispensary पे मुझे लेके गए, फिर कोई बस बहुत कुछ हुआ. And I'm also thinking, look how poor our emergency services are. There was nothing. There was no ambulance. On a highway that has experienced similar accidents. Nothing. Oh, wow. एक dispensary में गए जामशोरों में जहाँ पे कुछ नहीं था. They didn't even have painkillers. They had no medication. Amazing. तो एक डॉक्टर आए कोई यंग सा कोई किसी गांव से, उनको पता चला कि खूबसूरत जो है right. वो आई हुई है डिस्पेंसरी में, क्योंकि ये बात फैलनी शुरू हो गई. पीपल कुड सी माई फेस. सो आई वॉज ब्रॉट इन टू दिस प्लेस एंड बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं मुझे. तो एक डॉक्टर 1 घंटे बाद कहीं से आया, यंग डॉक्टर, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी एल्बो भी टूट गई है, क्योंकि यहाँ सारा कुछ बहुत पेन था. सो ही पुट मी इन अ कास्ट. यहाँ पे पूरे बाजू को कास्ट में डाल. Isn't that like the worst thing to do? It was the worst thing. Yeah. Because even I know that and I have absolutely no medical experience. मुझे प्लास्टर की कास्ट में डाल दिया. तो अब मैं कास्ट में हूँ and we're waiting for an ambulance to take me back to Karachi. There was no ambulance. There were no phone signals. And I remember किसी ना किसी तरह असफर ने किसी का फ़ोन लेके, किसी एक पुलिस वाले के पास कोई ऐसा नंबर था जिस पर सिग्नल आ रहे थे, तो कोई चीपा की एम्बुलेंस आई या पता नहीं कोई वैन आई. एम्बुलेंस भी नहीं थी. एंड इट केम आफ्टर 3 hours. अब 3 घंटे में वहाँ हूँ with no painkillers, nothing. And then it took us 4 hours to get to Karachi. Back to Karachi. South City पहुंची. अब मैंने हॉस्पिटल का नाम ले लिया. ठीक है. हाँ, so then I was there. अच्छा, जो orthopedic surgeons जिन्होंने मुझे चेक किया, 2-3 opinions ली. And डॉक्टर इमरान शाह जिन्होंने अब मेरी सर्जरी की है, उनके पास